कॉलेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ये लीगल डिक्टेशन की एक सीरीज चलाई जा रही है। इससे अलावा एक एसएससी डिक्टेशन की सीरीज चलाई जा रही है। ये सभी सीरीज जो हैं आप एक फीस के अंदर दोनों डिक्टेशनें लिख करके उसको टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं। और इस तरह का ये बिल्कुल ही यूनिक सॉफ्टवेयर पे आप लोगों को टाइपिंग करवाई जा रही है। जो बच्चे जो मैं डिक्टेशन पढ़ने जा रहा हूँ इसको पढ़ के शॉर्ट हैंड में लिखना चाहते हैं वो जो है ये जो नंबर है इस पर क्लिक करके उसका प्रोसेस जान लें भी। जैसे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर पर 8295200876 यानी कि अब जो है खाली डिक्टेशन लिखने से जैसे मतलब आप अपनी गलतियां नहीं चेक कर पा रहे थे, अब जो है इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसे आप डिक्टेशन लिख करके फिर जो है आप अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं। और जिससे आपको पता लग जाएगा भी आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, भी ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो दिया जाएगा उसके बराबर है कि नहीं है। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी क्या है, किस तरह की आप गलतियां करते हो, आउटलाइन एरर कैसे कितने हैं, कितनी आउटलाइन को आप गलत पढ़ रहे हो, वोकेबलरी सेक्शन का पता लगता है, स्पेलिंग एरर कितने हैं, कितने की स्पेलिंग आपने गलत कर दी है। हाफ फुल मिस्टेक, ये हर तरह की मिस्टेक्स आपको उसमें दिखने को मिलेंगी। तो जो भी बच्चा ये डिक्टेशन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको सुन के लिख करके इसको टाइप करना चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले लें और अपना एडमिशन करा के आप अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। The issue of whether a judicial officer has been actuated by an oblique motive or corrupt practice has to be determined upon a careful appraisal of the material on the record. Full stop. Direct evidence of corruption may not always be forthcoming in every case involving a misconduct of this nature. Full stop. A wanton breach of the governing principles of law or procedure may well be indicative in a given case of a motivated, if not reckless, disregard of legal principle. Full stop. In the absence of a cogent explanation to the contrary, it is for the disciplinary authority to determine whether a pattern has emerged on the basis of which an inference that the judicial officer was actuated by extraneous considerations can be drawn. Full stop. Cases involving misdemeanors of a judicial officer have to be dealt with sensitively and care. A robust common sense must guide the disciplinary authority. At one end of the spectrum are those cases where direct evidence of a misdemeanor is available. Full stop. Evidence in regard to the existence of an incriminating trail must be carefully scrutinized to determine whether an act of misconduct is established on the basis of legally acceptable evidence. Full stop. Yet in other cases, direct evidence of a decision being actuated by a corrupt motive may not be available. Full stop. The issue which arises in such cases is whether there are circumstances from which an inference that extraneous considerations have actuated a judicial officer can legitimately be drawn. Full stop. Such an inference cannot obviously be drawn merely from a hypothesis that a decision is erroneous. Full stop. A wrong decision can yet be a bona fide
error of judgment, full stop. Inadvertence is consistent with an honest error of judgment, full stop. A charge of misconduct against a judicial officer must be distinguished from a purely erroneous decision, whether on law or on fact, full stop. The legality of a judicial determination is subject to such remedies as are provided in law for testing the correctness of the determination, full stop. It is not the correctness of the verdict but the conduct of the officer which is in question, full stop. The disciplinary authority has to determine whether there has emerged from the record one or more circumstances that indicate that the decision which forms the basis of the charge of misconduct was not an honest exercise of judicial power, full stop. The circumstances let into evidence to establish misconduct have to be shifted and evaluated with caution, full stop. The threat of disciplinary proceedings must not demotive the honest and independent officer, full stop. Yet on other hand, there is a vital element of accountability to society involved in dealing with cases of misconduct, full stop. There is on the one hand a genuine public interest in protecting fearless and honest officers of the district judiciary from motivated criticism and attack, full stop. Equally, there is a genuine public interest in holding a person who is guilty of wrongdoing responsible for his or his actions. Neither, full stop, neither aspect of public interest can be ignored, full stop. Both are vital to preservation of the integrity of the administration of justice, full stop. ये लगभग 96 की स्पीड से मैंने इसको पढ़ा है। जो बच्चे डिक्टेशन इसको लिखी है, जिन बच्चों ने भी इस डिक्टेशन को लिखा है और वो चाहते हैं इस डिक्टेशन को लिख करके अब वो अपनी एक्यूरेसी जान लें कि उनकी जो शॉर्ट हैंड जितनी उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है शॉर्ट हैंड के अंदर वो कितनी उसमें सही है, तो वो चेक करने के लिए बच्चों सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड कर दिया है। वो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे वेबसाइट पे जा कर के jyoti-stenotypingcollege.in वेबसाइट है हमारी, वहाँ पर जा कर के आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा और वहाँ पर जा कर के आप टेस्ट नंबर जैसे लीगल डिक्टेशन 4002 है तो 4002 पे जा कर के वहाँ जब टेस्ट दोगे तो वो आपकी एक्यूरेसी आपको दिखा देगा, आपको पता लग जाएगा किस तरह की गलतियाँ, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या ऑनलाइन भी देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं, सारी सुविधा उसके ऊपर है। इसके लिए आप ये जो नंबर दे रखा है 829522000876 इस पर आप कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी शॉर्ट हैंड को अच्छा कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही बच्चों, नमस्कार बच्चों।